First question, what is the name of impure tricalcium silicate C3S which is a cementitious compound present in a commercial cement? Sir, allied. Allied, bilide, silite, halite. Allied, sir. ହେଲା ଏଟା ହଉଛି କଣ C3S କଣ ହେଇଯିବ Tricalcium silicate. Tricalcium. ट्राइकाल्शियम सिलिकेट कौन ହେଇଯିବ ୟାର ନା एलाइट ना बिलाइट ना कौन Allied, sir. Allied, sir. एलाइट ऑप्शन 1 एलाइट चलो फर्स्ट क्वेश्चन ठीक 2 नंबर आफ्टर ड्राइंग द ऑर्डिनरी सीमेंट एक्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ आफ्टर ड्राइंग सुखिला परे कोन को प्रॉपर्टी शो करिवो श्रिंकेज शो करिवो सुखिला परे श्रिंकेज शो करिवो ऑप्शन 2 जार भूल होला भूल मारिवो देखिया केते रहला कार नेक्स्ट द वर्टिकल मेंबर्स फिक्स्ड बिटवीन steps and handrail vertical member को कौन कहा जाए baluster formation of bubbles on painted surface ऊपर bubble formation को कौन कहा जाए blistering due to presence of the water vapors very good option 2 which of the following types of concrete is well known for its ductility and toughness ductility और toughness माने कौन रहिबो सेठी reinforcement रहिबो निहाती ductility और toughness concrete reinforcement ना सेटा तो reinforcement ना मते जणा नहीं आंसर तमन को एग्जाम चलछि Fiber. Option B. फाइबर एनफोर्स कंक्रीट जार ठीक है ठीक मारिबो जार भूल है भूल मारिबो जहा को आसिलानी जीरो मारिबो डक्टिलिटी और टफनेस पाई फाइबर एनफोर्स कंक्रीट फाइबर्स मिसा जाए फाइबर्स होची कोन पतला पतला सब गोटे फाइबर्स होची रेनफोर्समेंट हिसाब रे काम करे ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ Silicious, sir. Silicious. ग्रेनाइट होची गोटे सिलिशियस रॉक सिलिशियस आउ अनस्ट्रैटिफाइड रॉक Unstratified. मेटामॉर्फिक केनता हबो ग्रेनाइट रो मेटामॉर्फिक रॉक रो ना कोन नीस तले ग्रेनाइट केमिति मेटामॉर्फिक हबो सिलिशियस आपण भूल मारिबे हला भूल आपण -0.5 The approximate specific gravity value of soil constituent calcite is 4.75. 6.75. केते The approximate value of specific gravity of a soil और specific gravity कोडी देखिछो 4.75 आछि सब भूल मारिबो एटा 2.72. 2.6 ରୁ 2.9 ଭିତରେ soil और specific gravity आछि 4.75 कोड आनलो सब भूल मारो एटा 2.72 is the correct answer option 4 Which of the following is not the technique used in making lightweight concrete? Reduction in Option D. D. Option D. D haba sir. Omission of sand fraction from aggregate. ସମସ୍ତଙ୍କର option 4 ନା ଆଉ କାର କିଛି ଅଲଗା ଅଛି? Sir, more 2. Reduction in density of water. Reduction in density of water. ଆଉ କିଛି 2 4 ଭିତରୁ ଆଉ କାର କିଛି? एठी कौन देइछि देखो Incorporation of air bubble. इनकॉर्पोरेशन ऑफ एयर बबल आ तो गोटे ऑप्शन बंचिला एटा मु कहि दउ छाड़ गोटे ऑप्शन सब ऑप्शन ठीक है गोटे ऑप्शन बंचिला रहिला कोन आ
फास्ट ऑफ ऑल देखो ये कौन देइछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्निक नॉट पचारछि मते को डेंसिटी ऑफ द वाटर केबे चेंज करि हबो ये तो सब बेले फिक्स कि नहीं तो तमे केमिति रिडक्शन इन डेंसिटी ऑफ द वाटर करछो तो जो भी मैडम कहिसेन ऑप्शन 2 वेरी गुड ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर केही गोटे कॉमन सेंस लगेलो नि डेंसिटी ऑफ द वाटर तमे रिड्यूस केमिति करिवो डेंसिटी ऑफ द वाटर हो स्टैंडर्ड वैल्यू कि नहीं 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब नले 1000 केजी पर मीटर क्यूब जो भी पानी नियो जोठी भी टेस्ट करो तो रिडक्शन इन द डेंसिटी केमिति करिवो तो नॉट पचाछि एटा ही ऑप्शन 2 हो आंसर सब भूल मारो जो भी मैडम कहथिले ऑप्शन 2 ठीक करिवे नेक्स्ट 3 and 4. 3 and 4 ये से प्रीलिम्स रो क्वेश्चन फॉर ए नॉन टिल्टिंग टाइप ड्रम मिक्सचर नॉन टिल्टिंग टाइप रो कैपेसिटी अधिका कंपैरिजन टू योर टिल्टिंग टाइप गोटे ऑप्शन आसला 3 and 4 आ बाकी समस्तनकर नॉन ऑफ द अबव मारिबन जोटे देखियो क्वेश्चन कंफ्यूजन लागुची क्वेश्चन छाड़ दबो भूल कराठू बेटर लार्ज साइज एग्रीगेट अप टू 20 रु 25 सेंटीमीटर कैन बी हैंडल्ड फास्ट कोची लार्ज साइज ऑफ द एग्रीगेट से कोची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट मते को नॉन टिल्टिंग टाइप रो कैपेसिटी केते 200 लीटर रो कैपेसिटी नॉन टिल्टिंग टाइप रे हला से माने टिल्ट करंती नाही माने जेमिति रेडी मिक्स कंक्रीट तयारी करंती फास्ट ऑप्शन कोची लार्ज साइज एग्रीगेट अप टू 20 टू 25 सेंटीमीटर कैन बी हैंडल्ड हैला तापर से कोचे मैक्सिमम टाइम इज लेस देन 2 मिनिट मिक्सिंग टाइम इज लेस देन 2 मिनिट दुई तो देखि के लागु भूल कारण मिनिमम टाइम तो 3 मिनिट हाथ मिक्स कले भी तो दुई जोटी होचे काटी दियो सरला गोटे ऑप्शन बचला कि नहीं जनकर खाली आंसर आसला दैट इज ऑप्शन 4 बाकी मानकर सब जीरो बसेबो The vertical sides of a door and window openings provided in a wall are known as jam Jam. तो कौन कहबा जाम वर्टिकल को कौन आज्ञा कहबा गोटे डोर को यदि jam देखिबो jam एटा होचे डोर एटा होचे बंध एठू बाहर थाए तमरो डोर हैला एबे थाए तमरो डोर एथरे सु पैनल थाए को कोंती पैनल हैला ऊपर कहबा हमें टॉप रेल मझेटा होचे तळटा होचे बॉटम रेल मझेटा होचे स्टॉक रेल आ ये जो वर्टिकल पोर्शन कहबा हमें मूल्यन वर्टिकल पोर्शन होचे मूल्यन पैनल्स मूल्यन टॉप रेल स्टॉक रेल बॉटम रेल क्लियर हो गला एटी थाए गोटे हैंडल थाए धरिया पई हैला तो ये जो वर्टिकल पोर्शन टा ये जो जाक हम कोन कोन बंध ये जो वर्टिकल पोर्शन टा एटी थाए ताको हम कहबा जाम JAM B The vertical sides of a door or a window opening provided in a wall are known as jam. The corner stone or brick in masonry is called king king closer enclosure enclosure king closure माने जदि corner portion टाको हमें काटी देबा ताको हमें कहबा king closure हैला से कोचे corner stone और brick masonry से तुमको कहनी खाली गोटे corner बोली option 3 sir option 3 ऑप्शन sir 3 इज द करेक्ट आंसर से कोन हमको कहिछि कि गोटे corner बोली से कोन कहिछि corner stone
कर्नर स्टोन मान दीटा कर्नर एक कौन कहती क्वीन है कर्नर स्टोन और ब्रिक मशीनरी इज कॉल्ड एज क्वीन किंग क्लोजर आम क्या कहवा जब गोटे कर्नर खाली काटिदेवा ऑप्शन 3 जो मैंने किंग क्लोजर कर सब भूल मार Which code is used for classification of timber for seasoning purposes? Seasoning ପାଇଁ କୋଉ କୋड यूज Option କରାଯାଏ 3, sir. आइदर आसछु जदी करिवो जदी ए क्वेश्चन केबे आगु देखिनो कि मॉक टेस्ट फेस करनो डायरेक्ट छाड़िबो Option 3, टोटलिटी sir. माने कोन गेस मारिबोनी 1141 ऑप्शन 3 1141 टर्पेंटाइन ऑयल इज यूज्ड इन पेंट एज एटा कहितले एटा इंपोर्टेंट टर्पेंटाइन ऑयल Thinner. Thinner. थिनर बा सॉल्वेंट हिसाब रे यूज करा जाय व्हीकल हेले दैट इज योर Linseed oil. linseed oil strong oil Strong oil. the depth of an arch is the distance between 4. Option 4. एटा हो जोडे आर्च So, आर्च रो तळ पोर्शन को कहा जाय इंटरडस ऊपर पोर्शन को कहा जाय एक्सट्राडस Extra. तो डेप्थ ऑफ ए आर्च इज द डिस्टेंस बिटवीन इंटरडस एंड Extradus. एक्सट्राडस ताको हमें कहबा कोन Option 3, डेप्थ ऑफ द sir. आर्च हैला बताओ. कोन होबे आंसर Option D, sir. 4, Option sir. D. ऑप्शन डी इंटरडस एंड एक्सट्राडस तळ पोर्शन आ ऊपर पोर्शन भितरे डिस्टेंस को हमें कहबा दैट इज योर डेप्थ ऑफ द आर्च द sir, एटा इंडिविजुअल स्प्रिंगिंग वेरिएशन लाइन बिटवीन रू नि हमन कोटा सर डेप्थ माने से जो आर्च रो डेप्थ को आउची ना माने से जो मटेरियल रो डेप्थ को आउ आर्च आर्च एटा हो जे आर्च हेले एई डेप्थटा सर माने से जो आर्च होचे से जो आर्क रो तो सेंटर रू माने से जो स्प्रिंगिंग लाइन रू भी तो हे पर ना होबनी केमिति हमर आर्च रो स्ट्रिंगिंग लाइन माने एपट एठी आसी जो तळ पोर्शन टा एटा होची इंट्राडस नै कि एक्स्ट्राडस एकु हमें कहबा डेप्थ ना माने आर्च रो थिकनेस केते केते थिकनेस आर्च तयारी करछो द इंडिविजुअल वेरिएशन बिटवीन टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब सैंपल शुड नॉट बी मोर देन 15, sir. इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन बाकी माने आंसर करो 5%. 5% Option 3. इंडिविजुअल वेरिएशन प्लस और माइनस 15% 5 कोडी थिला 5% जो शुड नॉट एक्सपेक्टेड टू फॉल not more than Characteristic 5% सेटा थिला characteristic strength वेरिएशन हबो प्लस और माइनस 15% स्टार्टिंग सब ऊपर आंसर दोथले कोन बैटरी डाउन हेलान सब धीरे धीरे पोर्टलैंड सीमेंट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम प्योर व्हाइट chalk and clay but free from iron oxide is known as White cement. White cement. व्हाइट सीमेंट White कारण cement. आयरन ऑक्साइड रहियो माने ग्रे कलर रहियो आयरन ऑक्साइड जदी नाही देन ताको हम कहबा व्हाइट सीमेंट गुड नेम द ट्रस ये ट्रस को हमें कौन नाम दवा इस ट्रस को क्या नाम दो King, sir. King post. King post. किंग पोस्ट क्वीन हेतले केमिति हेतांदा ये कमे कहबा क्वीन पोस्ट हैला किंग पोस्ट केमिति किंग पोस्ट केमिति किंग पोस्ट किंग पोस्ट सेंटर रे रहइबो कि नहीं Center कौन right, टाइप रो sir. ट्रस अछि किंग पोस्ट क्वीन पोस्ट हैला Pink. जदि किंग पोस्ट आउ क्वीन पोस्ट दी जन को जदि कॉम्बिनेशन रहले ताको हम को ट्रस कहबा एटा होची कॉम्बिनेशन ऑफ द किंग पोस्ट आउ क्वीन पोस्ट तो एटा होची किंग पोस्ट आंसर ठीक होची Pink. बट बाकी सब उठे सुनता कॉम्बिनेशन ऑफ किंग पोस्ट आउ क्वीन पोस्ट एटा होची मनसास ट्रस्ट
The stone masonry adopted in construction of architectural importance which gives smooth appearance. Statement କହିଥିଲି କାର ମନେ ଥିବ ଯଦି ଆସ୍ଲାର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରୋବଲ। Ashlar machinery sir. ଭେରି ଗୁଡ ଆସ୍ଲାର masonry। ସ୍ମୁଥ ସରଫେସ ହଉଛି ଆସ୍ଲାର masonry। ରଫ୍ ସରଫେସ ହେଲେ ସେଟା ହେଇଥିବ ରୋବଲ masonry ହେଇଯିବ। ତ ଆସଲାର ଟା କଣ? ମାନେ ସରଫେସ ଏଟା ହଉଛି ଷ୍ଟୋନ ସରଫେସ। ଷ୍ଟୋନ ସରଫେସ ଷ୍ଟୋନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଟିଂ କରିବା ଯଦି ୟାକୁ ପ୍ରପର ସ୍ମୁଥ ଫିନିଶ ଦବା ଦେଇକି ଆମେ ମାସନାରୀ ମାନେ ଯୋଉ ୱାଲ ତିଆରି କରିବା ଦେନ୍ ତାକୁ କହିବା ଆସ୍ଲାର ମେସନରୀ। ଯଦି ଆମେ ଇଟାକୁ ନର୍ମାଲ ଇଟା ତ ନୁହେଁ ପଥରକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଡ୍ରେସିଂ ହେଇନି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରପର ଫିନିସିଂ ହେଇନି ମାନେ ଦେଖିବ ଯଦି ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କ ଲାଗିଥିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆସ୍ଲାର ମେସନରୀ ପ୍ରପର ଫିନିଶ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ନର୍ମାଲି ଦେଖିବ ପାଚେରୀ ହେଇଥିବ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଆଗରୁ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ୟୋର ରୁବୁଲ ମାସନାରୀ। ଆସ୍ଲାର ମାନେ ହଉଛି ସ୍ମୁଥ ସରଫେସ ରୁବୁଲ ମାନେ ହଉଛି ରଫ୍ ସରଫେସ। ଷ୍ଟୋନ ର ଏସବୁ ହଉଛି ଷ୍ଟୋନ ର ମାସନାରୀ ର ଟାଇପ୍ସ। ଯେମିତି ବ୍ରିକ୍ ୱାଲ୍ ହଉଛି ବ୍ରିକ୍ ମାସନାରୀ ସେମିତି ଷ୍ଟୋନ ର ୱାଲ୍ ହେଲେ ଷ୍ଟୋନ ମାସନାରୀ। Consider the following statements regarding the properties of lime mortar. Properties of lime mortar है क्या ठीक? Sir 1, 2, 3 option D. Option 4. 4 sir. Option 4. 1, 2, 3. Lime mortar is quite plastic and workable. Lime mortar develops strength slowly but continues to gain strength over a long period. Lime mortar gives a fairly strong surface finish. Lime mortar होची हमर केमी तैयार हेता है लाइम सहित मोटर को मिसेकी लाइम सहित हमर लाइम सहित सीमेंट को मिसेबा पानी मिसेबा दैट इज लाइम मोटर। सीमेंट प्लस लाइम प्लस सीमेंट प्लस लाइम प्लस सैंड प्लस वाटर है ताको हम कहबा गज मोटर। खाली सीमेंट प्लस वाटर है दैट इज योर सीमेंट मोटर। तो लाइम कौन करे स्लोली रिएक्शन करिवो कंपैरिजन टू योर सीमेंट। तो एठी हबो 1 2 3 ऑप्शन 4। CaO को हमें कहबा क्विक लाइम CaOH रो होल टू को हमें कहबा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बा हाइड्रोलिक लाइम। लाइम नॉर्मली हमर केते प्रकार थाए लाइम होची गोटे थाए फैट लाइम जोथरे कैल्शियम ऑक्साइड थाए मोर देन 95% आउ इम्प्योरिटी जेमिति कि क्ले थाए लेस देन 5%। Less than 30. 5% लेस 5 देन na 30 sir. 5 लेस देन 5% क्ले जदी CaO ग्रेटर देन 95 होची ताले क्ले केते रहइबो लेस देन 5 रहइबो कि नै। क्ले Yes. होची कोन इम्प्योरिटीज क्लेयर कंटेंट जिते अधिक रहइबो सेते हाइड्रोलिसिटी प्रोवाइड करिवो से जिंसडा सेते हाइड्रोलिसिटी प्रोवाइड करिवो। हाइड्रोलिसिटी माने होची कोन व्हाट डू मीन बाय हाइड्रोलिसिटी। हाइड्रोलिसिटी माने होची तोर गोटे बेसमेंट एरिया अछि बेसमेंट एरिया रे माने लाइम टा कोन हबो प्रॉपर जेतु वेंटिलेशन नाही तो एते शीघ्र हार्ड हबो नाही। तो जोठी इम्प्रॉपर वेंटिलेशन थिबो सेठी भी जदी लाइम टा सेट हे जाउची सेही लाइम रो से प्रॉपर्टी को हमें कोन कहबा हाइड्रोलिसिटी। तो जो लाइम रे क्ले कंटेंट अधिक रहइबो से हाइड्रोलिसिटी सेते भलो प्रोवाइड करिवो। लाइम होची जेमिति फैट लाइम व्हाइट वॉशिंग रे यूज करा जाय हाइड्रोलिक लाइम लाइम और प्लास्टरिंग काम रे यूज करा सीमेंट जाय। हाइड्रोसिटी कार अधिका लाइम आउ सीमेंट भितरु हाइड्रोलिसिटी डिपेंड करछो को लाइम यूज करछो को लाइम यूज करछो डिपेंड करछो। जदी हाइड्रोलिक लाइम यूज करछो तार हाइड्रोलिसिटी सबुठ बढ़िया हो। हाइड्रोलिक लाइम सीमेंट रे लाइम केते अछि 62% अछि तो यार हाइड्रोलिसिटी कोन रहइबो कम रहइबो। हमरो सीमेंट रे 67% अछि बट हमर जो पोर लाइम अछि गोटे होची प्योर लाइम आउट होची इम्प्योर लाइम। प्योर लाइम होची दुई प्रकार फैट लाइम आउट होची क्विक लाइम। इम्प्योर लाइम होची दुई प्रकार गोटे होची हाइड्रोलिक लाइम आउट होची पोर लाइम। पोर लाइम रे लेस देन 70% थाए कैल्शियम ऑक्साइड। सीमेंट रे कैल्शियम ऑक्साइड केते थाए 62 रु नेकी 67%। तो यार हाइड्रोलिसिटी खराब रहइबो भलो एते आसीबोनी। Next question, which of the following laboratory test on coarse aggregate is not conducted to assess the shape of aggregate? Shape of the aggregate ପାଇଁ which test not conducted?
Option 2 sir, double attrition. डेभाल आट्रिशन Double टेस्ट एटा attrition. कोन पई करा जाय एटा करा जाय डोरी आब्रासन जो थिला Glory एटा abrasion होचे hand. ओआर एंड टियर पई ये क्वेश्चन केमिति भूल होउछ रे सोता कोन इंजीनियर्स माने कोन करिवो एग्जाम रे फ्लैकिनेस एलोंगेशन एंगुलरिटी ये सब होची सेफ टेस्ट बट डोरी आब्रासन टेस्ट जोटी कोन पाउतलो कोएफिशिएंट ऑफ द हार्डनेस दैट इज 20 माइनस लॉस बाय Yes, sir. 3 केउठु ही पाउतलो डेभाल आट्रिशन टेस्ट एटा होचे ओआर एंड टियर हार्डनेस पई से डोरी सब और भूल डेवल मारछ आट्रिशन तो सेम अछि ना अलग अलग ना ये ना सेम ना तीन ना ना आमर ओआर एंड टियर पई तीन जण को ना तीनटा apparatus थाए तार सब डिफरेंट डिफरेंट ना गुडा गोटे होचे डेभाल गोटे होचे डोरी सब डिफरेंट डिफरेंट ना गुडा काम तीन जनकर सेम जार भूल होचे भूल मारछ तो लास्ट को पचारि कार केते रहइला है ना ऑनेस्टली कहबो मार्क कर बढ़ई कहबोनी इनिशियल सेटिंग टाइम इज मैक्सिमम फॉर मान भितर को सीमेंट रो इनिशियल सेटिंग टाइम Low होचे heat, मैक्सिमम low heat Portland sir. लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट लो हीट पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट रो इनिशियल सेटिंग टाइम अधिक आसीबो कारण ये धीरे धीरे सेट हो एक रो तो लो हीट अछि C2S कंटेंट अधिक थिबो डाई कैल्शियम सिलिकेट जे कि हीट ऑफ द हाइड्रेशन दबो 260 जूल पर ग्राम जे कि बहुत स्लोली रिएक्टिंग एजेंट करिवो ता सहित पुनी पोजोलाना भी अछि से आउरी स्लो करिवो तो यार इनिशियल सेटिंग टाइम अधिक आसीबो ऑप्शन 3 सर ये जो पोर्टलैंड पोजोलाना ये जो चारटा जाक सीमेंट होची माने एटा पोजोलाना सीमेंट रो टाइप्स ना कोन पोजोलाना नहीं नहीं पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट एथिरे कोन मिसेबो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग ये होची कोन गोटे पोजोलाना रो होची दुई प्रकार पोजोलाना होची गोटे होची आर्टिफिशियल पोजोलाना गोटे होची नेचुरल पोजोलाना होची क्ले आउ सेल आर्टिफिशियल पोजोलाना होची डिफरेंट डिफरेंट टाइप जेमिति कि फ्लाई एश हे गला ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हे गला राइस हॉस हे गला सिलिका फ्यूम हे गला तो ता भीतर ब्लास्ट फर्नेस जदी मिसेली देन पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट पाइबी जदी पोजोलाना मिसौची आर्टिफिशियल पोजोलाना मिसौची दैट इज 10 to 25% देन पाइबी पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट पीपीसी पाइबी पोर्टलैंड पोजोलानिक सीमेंट आ लो हीट केतले पाइबी जदी C2S कंटेंट अधिका रखुची सेही सीमेंट रे ताल पाइबी लो हीट पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट लो हिट माने ओपीसी रो मॉडिफाइड लो हीट टा होची एथिरे C2S कंटेंट आहुरी कम रहइबो कंपैरिजन टू दिस C2S कोन आहुरी अधिका रहइबो कंपैरिजन टू दिस C2S जार जते अधिका रहला से जते लो हीट कंपैरिजन टू C3A आउ C3S तापर डायरेक्ट फार्मूला Fm is equal Plus to plus 1.68. Option 3. 1.68. ये क्वेश्चन जार भूल होतो क्लास से बाहर कर दिया जिवो drawing operation involved in mechanical treatment of steel is carried out ये सब होचे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अदर स्टेट जेई एग्जाम आ ए एग्जाम अनकर तो तम एग्जाम पे इंपोर्टेंट ड्राइंग माने होचे क्रॉस सेक्शन को कमेवा लेंथ को टाणीबा क्रॉस सेक्शन को कमेवा टू रिड्यूस द क्रॉस सेक्शन एंड इंक्रीज द लेंथ से ऑपरेशन को कोनते ड्राइंग हैला स्टील रे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होची गोटे होचे ड्राइंग आउटे होची फॉर्जिंग डेंसिटी बढ़ेवा ताको फॉर्जिंग आउटे होची प्रेसिंग आउटे होची रोलिंग ये सब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस ताबे तो बोझ ड्राइंग टा कोन बेसमर ओडा कोन अछि ओडा कोडा होची बेसमर अगेन बेसमर होची स्टील मैन्युफैक्चरिंग रो प्रोसेस ताको कोन बेसमर प्रोसेस इन्वॉल्व हुए स्टील मैन्युफैक्चरिंग रे प्रोसेस को कहा बेसमर प्रोसेस तो एटा तले समस्त जीरो मार्क कार को आसलानी टू रिड्यूस द क्रॉस सेक्शन एंड इंक्रीज द लेंथ क्राउन ग्लास इज एन एग्जांपल ऑफ
Option 1, sir. Seat glass. Sir, option 1. Crown glass is an example of soda lime gas. Soda lime glass. ହେଲା क्राउन ग्लास सोडा लाइम गैस को एठी एक्चुअली बोरोसिलिकेट भी अछि दुटा भाई परियो सोडा लाइम ग्लास आउ बेरियम ऑक्साइड हैला पोटेशियम ऑक्साइड बेरियम ऑक्साइड सिलिका ये सब मिसै के तैयारी करा जाय क्राउन ग्लास तो ऑप्शन 1 तो केबे होबोनी सीडी ग्लास होबोनी क्राउन ग्लास होची बोरोसिलिकेट ग्लास ही परियो नले सोडा लाइम भी पार्शियली ठीक हे परियो बोरोसिलिकेट मारियो बोराक्स मिसा जाए बोराक्स आउ सिलिका मिसा जाए बेरियम ऑक्साइड ग्लास तुम सिलेबस ना हला बट प्रीवियस और क्वेश्चन एटा सब अदर स्टेट्स रो क्वेश्चन तांको क्वेश्चन रे छापी देला देन पढी पारे बेरियम ऑक्साइड और सिलिका मिसा तैयार करे छै according to IS 12269 insoluble residues in OPC 53 grade cement shall not be greater than dash by mass 1.5. केते हबो 4%. 4% 4% ऑप्शन 4 एटा समस्त जीरो बसो के का बसलानी नेक्स्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिफेक्ट इन टिम्बर एको हमें को डिफेक्ट कहबा बाहर जो आउटर बाक रे स्टार भली हो जाई छै Sec. Start section. स्टार से एलाइड बिलाइड सिलाइड फेलाइड फर्स्ट क्वेश्चन तो कहथिल ऑलरेडी C3S होची 0.4. Option A. Option 1. ऑप्शन 1 0.4 0 Uh, 3. 3 R Arrow 1. 1 Light. फेलाइट होची टेट्रा कैल्शियम एल्युमिनियम फेराइट S रो 2 ऑप्शन 1 इज द करेक्ट in ball test for classification of lime the balls are made of size जेति सब ए पीडीएफ को कोन करियो जेति सब न्यू इन्फॉर्मेशन पाउयो ताको सब शॉर्ट नोट से रखियो जेति कि न्यू इन्फॉर्मेशन होला ए क्वेश्चन पढिबार चांसेस केतोले पढिबो जदि तुम ओएसएससी अदर स्टेट्स रो जेई एग्जाम को छापिला ओएसएससी सेटा ही करूछ सिलेबस थोड़ी से देखा जाए बस क्वेश्चन को छापियार अछि ईएससी रो प्रीवियस और क्वेश्चन जदि फाइनल जो शॉर्ट क्वेश्चन गुडा छापिला देन ई सब क्वेश्चन आसी परिबो 40 mm option 1 freshly cut surface of timber should exhibit 3. गोटे फ्रेशली गोटे गछ कटा ହେଇଛି कोन रहइबो शाइनिंग सरफेस शाइनिंग रहइबो कि Hardness. Option 4. Hardness. Option 4. शाइनिंग सरफेस रहइबो हार्ड रहइबो कि सॉफ्ट रहइबो Soft. गोटे गुड क्वालिटी टिम्बर आमे केतोले कहबा जदि गोटे गछ को फ्रेश काटिबा सेटा हार्ड रहइबो हार्डनेस रहइबो आउ शाइन रहइबो हैला गछ जतबे डिके हेजिवो देन सॉफ्ट हेजिवो फंगस फंगस अटैक हेजिवो देन सॉफ्ट हेजिवो शुड बी हार्डनेस आउ शाइनिंग प्रॉपर्टी रहबा दरकार ऑप्शन 2 जो माने 4 कहलो सब भूल मारियो -0.5 Next, consider the following statement. Aluminium is being increasingly used for structural purposes because of what? Elastic modulus of aluminium is 1/3 of elastic modulus of steel. So, aluminium is being increasingly used in structural purpose. कौन पाई?
2. Option 4, Option sir. 3 only. 4. 3 only. 3 only. First option 3 टा कौन कहूची? The strength to unit weight ratio of aluminum is high. Strength to unit weight ratio माने तार ओजन हल्का रहिबो, तार कंपैरिजन टू स्ट्रेंथ भलो रहिबो, तो ऑप्शन 3 टा ठीक अछि। ऑप्शन 2 कहूची its coefficient of thermal expansion is half that of steel. एटा काई ठीक अछि सर, भूल एटा होला? ठीक अछि सर, ठीक अछि सर। ताले 2 भी ठीक अछि, ऑल ऑफ ताले दिस तो 4 हबन। ताले 1 2 3 सब ठीक ऑप्शन अछि 3 आज्ञा। ऑप्शन 3 एटा को प्रोसेस का परे कोटा फास्ट कौन करिवो? अनसॉइलिंग करिवो ना डिगिंग करिवो? अनसोइलिंग Answer. फास्ट अनसॉइलिंग तापर डिगिंग, तापर ताको देखिया दरकार नहीं। ऑप्शन 3 weathering, आपको से मैच करिया दरकार नहीं। अनसॉइलिंग पर टेम्परिंग दे दीजिए, अनसॉइलिंग तापर डिगिंग तापर वेदरिंग तापर ब्लेंडिंग तापर टेम्परिंग तापर मोल्डिंग welding, तापर ड्राइंग तापर बर्निंग। A good method of maintaining a satisfactory state of wetness in a body of concrete to promote continuous hydration when original water cement ratio used is not less than 0.5 is known as water curing। तो पानी रखिबा से कहूची when original water to cement ratio used is not less than 0.5। मेम्ब्रेन क्यूरिंग सर। मेम्ब्रेन क्यूरिंग गोटे वाटर प्रूफ मेम्ब्रेन आमे बिछे दबा, मॉइस्चर गुडा को भीतर रहिबो, इवापोरेशन करबा को दबो नाही। दैट इज योर मेम्ब्रेन क्यूरिंग हैला, सो दैट कि कंटीन्यूअस हाइड्रेशन रहिबो। हाइड्रेशन प्रोसेस ता कंटीन्यूअस चलिबो, जो भी मॉइस्चर गुडा इवापोरेशन हेके जाउतो से आउ इवापोरेशन हबो नाही। दैट इज योर मेम्ब्रेन क्यूरिंग फॉर कंटीन्यूअस हाइड्रेशन। What is the Indian standard for safety code for handling and storage of building materials? 7069 केते आसीबो? 7969 for safety for code for handling and storage of building materials 7969 1975। Next, as per IS 10262 2019, the water to powder ratio is expected to be between days for designing of self-compacting concrete mix। केते रहबे दरकार? 0.85 ରୁ 1.10। ऑप्शन 1 ये सब रखिबो शॉर्ट नोट्स रे एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन किबा अदर स्टेट्स जहाँ भी हेडिंग देखी ये सब जोड़ा नुआ नुआ क्वेश्चन पाउछो, जोड़ा कि नॉर्मली तुम सिलेबस रे नाही, नॉर्मली तुम ओएसएस सिलेबस नाही, बट अदर स्टेट्स जेई एग्जाम रे पचारुची से सब एक्स्ट्रा लिखी मेंशन करियो। ISC 110205 the water absorption limit of aggregates except slag tested as per IS 2386 used in surface dressing finishing course is 1%। surface dressing पे हमें केते यूज करिवा limit of the aggregates water absorption should be 1। 1%। स्मिथ टेस्ट का पे करा जाए एटा समस्त आंसर कर परियो। Hardness. स्मिथ टेस्ट का पे करा जाए सॉल्युबल मैटर
এটা প্রিভিয়াস ইয়ার क्वेश्चन स्मिथ टेस्ट सॉल्युबल मैटर स्मिथ टेस्ट करा जाए केते सॉल्युबल मैटर अछि प्रेजेंस ऑफ मॉडी सब्सटेंस ऑप्शन 4 where resin is used as resin varnish the suitable solvent is एटा कोथले पचारिबो solvent types of the varnish रे पचारछि spirit varnish रे कोन यूज करा जाय methylated spirit एटा होछि spirit varnish turpentine कोठी यूज करा जाय turpentine varnish Turpentine. lynched oil कोठी यूज करा जाय तो एटा पचारछि resin varnish रे कोन यूज करिवो Wood. resin varnish रे wood naphtha naphtha कोन यूज करिवो naphtha गोटे होछि स्पिरिट varnish रे methylated spirit यूज करिवो आउट होछि ऑयल varnish रे यूज करिवो lynched oil Linseed. एटा होछि ऑयल varnish एटा होछि स्पिरिट varnish तो दीटा ऑप्शन कटि गला गोटे होछि नाफ्था गोटे होछि टर्पेंटाइन एटा वाटर varnish रे हमें हॉट वाटर यूज करंती टर्पेंटाइन हमें कोन यूज करंती टर्पेंटाइन यूज करंती ना टर्पेंटाइन varnish रे तो ये जो रेजिन varnish एटा होछि टर्पेंटाइन varnish कि नहीं टर्पेंटाइन varnish जो टर्पेंटाइन यूज करा जाए naphtha नुहे दिस इज योर टर्पेंटाइन ऑप्शन 2 यूपीएमआरसी जेई 2020 रो क्वेश्चन द acid value of type 1 lynched stand oil for paint is जଣା ଅଛି type 1 lynched oil 6 ऑप्शन 2 हैला देखो केते सारा नुवा नुवा क्वेश्चन पाउछु तो या पे ओरिड हवा दरकार नहीं जे एडा सब सारा नोट्स नहीं कोड पढिबो केमिति पढिबो तो याडा किछि पढिया भी दरकार नहीं नोट्स देखिया भी दरकार नहीं जहाँ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पड़ो ताको खाली सेही एक्स्ट्रा क्वेश्चन गुडा लिखिबो कारण तमे यदि वाई सीट रो जेई रो 5टा वॉल्यूम रो क्वेश्चन देखिबो एसएससी जेई आरआरबी जेई यूपीएमआरसी जेई अदर सेस जेई एते सारा जेई रो क्वेश्चन अछि समस्त सिलेबस डिफरेंट आ ता धरो तमरो ओएसएससी छापुजी क्वेश्चन तो सबू क्वेश्चन को करिया को जीवो जदी वर्षे खण लागि जो टाइम डेली यदि 100टा क्वेश्चन भी करूछु 100 200टा क्वेश्चन करूछु तो हमको ता भीतर बाची बाची करिवार अछि जोटा मॉक टेस्ट रे आसुची कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नोट्स रु बाहर रहला ता खाली लेखि के रखिबो शॉर्ट नोट्स हिसाब रे सब क्वेश्चन करियो काहा को भी टाइम होबन एटा कोन हो व्हिच टाइप्स ऑफ द स्पेशल मोटर्स आर यूज्ड फॉर सेटिंग रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स माने कोन फायर रेजिस्टेंस मोटर रिफ्रैक्टरी माने फायर रेजिस्टेंस Option 4, sir. ऑप्शन 4 फायर रेजिस्टेंस Which type of lime is almost pure lime obtained by calcination of limestone? It is used for making lime sand mortar for superstructure, lime surki mortar for substructure, and lime terracing and flooring. Online, sir. को lime को हमें कहबा एटा हो जोटे pure type रो lime Stone line. stone lime pure type रो lime that is your stone lime option 2 The lime used for making masonry mortar, lime concrete and plaster undercoat को lime यूज करियो Option 3, sir. Semi-hydraulic line. क्लास बी सेमी हाइड्रोलिक लाइम हो जो गोटे टाइप जोटा कि मासनरी काम रे यूज करा जाए क्लास बी सेमी हाइड्रोलिक लाइम यूज फॉर मासनरी वर्क ऑप्शन 3 A quick method of seasoning of timber with arrangements for heating and humidifying the drying air to the desired condition of temperature. A relative humidity and the circulation over the surfaces of timber stacked is Option 1, sir. Clean seasoning. clean One. seasoning. Clean seasoning माने कौन सबुठ भलो seasoning
सर रिफ्रैक्टरी स्प्रिंग टा मीडियम कोन कार्बन रिफ्रैक्टरी माने पूरा हाई टेम्परेचर रे पूरा हाई टेम्परेचर मीडियम कार्बन स्टील डैश परसेंटेज कार्बन थाए स्टील ले केते थाए कार्बन मीडियम कार्बन स्टील स्टील होची केमी थाए कार्बन आउट होची अल्लॉय कार्बन होची तमरो तीन प्रकार गोटे होची लो कार्बन मीडियम कार्बन आउट होची हाई कार्बन हैला लो कार्बन स्टील होची बहुत ही कम थिबो कार्बन कंटेंट जेमिति कि 0.05 रु नै कि 0.15% थिबो तमरो कार्बन कंटेंट दैट इज लो कार्बन स्टील मीडियम कार्बन होची 0.3 रु नै कि 0.8% थिबो तमरो कार्बन कंटेंट हाई कार्बन स्टील होची 0.8 रु नै कि 1.5% थिबो कार्बन कंटेंट तो मीडियम कार्बन होची माने 0.3 रु 0.8 0.3 रु 0.8 माने ऑप्शन 1 when tested by Lee Chatelier method as per IS 4031 on aerated ordinary rapid hardening cement shall not have an expansion of more than केतेरु अधिका हबा कथा नुहे एक्सपेंशन 0.75 0.75 किंतु ऑप्शन नहीं नहीं 0.75 85 0.85 p सेटा असला वाटर कंटेंट कंसिस्टेंसी 0.85 हो तो इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम पे ली चैटलर्स होची अनसाउंडनेस होची कोन साउंडनेस जोड़ा साउंडनेस टेस्ट 0.78 p केते था एक्सपेंशन 10 mm एटा जो apparatus था ली चैटलर्स 165 mm था हैंडल 0.5 mm था तार थिकनेस 30 mm into 30 mm था तार डायमेंशन ए जो एक्सपेंशन 10 mm रु अधिका होबा कथा नहीं 0.78 p अच्छा एटा कोन नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कर देली if p is the standard consistency of cement how much water is added to cement for setting time test setting time माने 0.85 p age factor for gain in strength of concrete with age after 6 months 6 month पर केते हितबो 15% 1.15 1.15 है ना 16 हमर 15% बा 1.15 गोटे मास हेले 1 10% 3 मास हेले 1.1 1.10 6 मास हेले 1.15 12 मास हेले 1.2 1.2 ये इटा को हमें कौन कहबा Gain closer किंग क्लोजर ऑप्शन 3 किंग क्लोजर गोटे कॉर्नर पर्सन उड़ी जाइछि किंग क्लोजर which of the following test is not conducted on limestone रे हमें को टेस्ट करबा नहीं स्टड पुल अप टेस्ट फिजिकल टेस्ट गोटे होची हीट टेस्ट आउट होची एसिड टेस्ट हला आउट होची बॉल टेस्ट तो लाइमस्टोन रे हमें स्टड पुल अप टेस्ट करबा नहीं हीट करबा एसिड करबा और बॉल करबा स्टड पुल अप करबा नहीं if fineness modulus of particle is 8 then it is termed as fineness modulus 2.2 to 2.6 2.6 to 2.9 2.9 to 3.2 3.2 to 6.5 6.5 to 8.5
Course Course degree. aggregate. कोर्स एग्रीगेट 2.2 ରୁ 2.6 ହେଲେ फाइन सैंड मन अछि 2.2 ରୁ 2.6 फाइन सैंड 2.6 ରୁ 2.9 2.9 मीडियम सैंड 2.9 ରୁ 2.9 to 3.2 3.2 कोर्स सैंड तापर 3.2 ରୁ 6.5 फाइन एग्रीगेट 6.5 ରୁ 8.5 कोर्स एग्रीगेट the main function of base in a oil paint base रो main function कौन गुडे oil paint गुडे base रो काम कौन गुडे base रो काम होउछ गुडे अस्वच्छ कौन करिवो गुडे option 3 opaque sir create Three करिवो hobo. provide an opaque coating which would hide the surface to be painted option 3 amount of silica in a good clay brick 50 to 60 option 1 50 to 60 the base material for distemper कौन यूज करा जाए चॉक Chalk. यूज करा जाए कि नहीं Chalk. chalk ऑप्शन 2 चॉक यूज करा जाए No. based on geological classification 6 rock types are given below identify the rock types which do not fall under the category of metamorphic rock समान भीतर किए metamorphic rock नुहे आ नीस होची metamorphic granite रो slate होची metamorphic shell रो granite होची not a metamorphic rock marble होची limestone रो metamorphic rock quartzite होची sandstone रो metamorphic rock dolomite is not a metamorphic rock तो granite आउ dolomite not a dolomite metamorphic rock which of the following is not a defect in paint एमान भितरु कोटा पेंट रो गोटे डिफेक्ट नुहे oxygen ग्राइंडिंग अछि Yes. ऑक्सीनेस टा काहर डिफेक्ट timber Timber. टिम्बर डिफेक्ट वेरी गुड which of the following is not a defect in timber cause weakness or other sorts of difficulties not a defect of timber defects due to deforestation किछि लागि no डिफेक्ट्स ड्यू टू option 3 डिफॉरेस्टेशन किछि सेमिति नथिला फंजी थिला नेचुरल फोर्सेस थिला अटैक बाय इंसेक्ट थिला द मेन constituent of a Portland cement 62 to 67% line a compacting factor होची 0.88 for a fresh concrete sample ताले मिक्स टा कोड जिवो 0.78 रु कम 0.78 रु evaluate High. 0.88 जदि थिबो ता जिवो मीडियम वर्केबिलिटी ना हाई वर्केबिलिटी 0.95 रु अधिका हेले हाई वर्केबिलिटी 0.88 हेले दैट इज योर medium मीडियम वर्केबिलिटी 0.95 रु अधिका हेले जाएंगे हाई वर्केबिलिटी द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम परपेंडिकुलर ना पैरेलल स्ट्रेंथ ऑफ प्लाईवुड हेले परपेंडिकुलर स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर हेले स्ट्रेंथ ऑफ द टिम्बर इज मैक्सिमम कौन पैरेलल टू ग्रेन पैरेलल प्लाईवुड हेले टिम्बर ର perpendicular ଗ୍ରେନ୍ କେମିତି ମାନେ ନିଆ ହୁଏ ମାନେ ସେଟା ସାର୍କୁଲାର ଥାଏ ନା ଲଙ୍ଗିଚୁଡନାଲ ଥାଏ ଏମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ପଟ୍ଟା ଧରିବ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରେନ୍ସ ଗୁଡା ଥାଏ ହେଲା ସାର୍କୁଲାର ଯୋଉ ଗ୍ରେନ୍ସ ଗୁଡା पैरेलल टू ग्रेन प्लाईवुड होची कौन परपेंडिकुलर प्लाईवुड होची परपेंडिकुलर टिम्बर होची पैरेलल ऑप्शन 1 some of the minerals are listed below talc gypsum fluoride quartz diamond calcite identify the correct sequence of hardness of mineral from soft to hard सबुठ हार्ड किए हबो जति अछि मेटल्स Diamond. डायमंड देखो को ऑप्शन ले तमरो फास्ट अछि डायमंड सॉफ्ट टू हार्ड देछि ताले सबुठ लास्ट रे के रहइबो डायमंड रहइबो सबुथरे देखो सबुठ लास्ट रे अछि डायमंड सबुथरे सबुठ फास्ट रे अछि ए ताले सबुठ सॉफ्ट के हेगला Talc. टाल्क हेगला सबुठ सॉफ्ट डायमंड हेगला सबुठ हार्ड Gypsum. ହେଲା ତାପରେ ଆସିବ କିଏ
जिप्सम gypsum, तापरे फ्लोराइट फ्लोराइट परे mm, क्वार्ट्ज